by Sharda University and NECC. Ajit Pawar claims more than 40 MLAs and bulk of the MLCs of the NCP right now are supporting him. After numbers, the fight now comes down to symbol and the name. Ajit's camp claims that the NCP symbol and name is only theirs. Moments after Sharad Pawar sacks Tatkare from the party, the Ajit Pawar camp appoints Sunil Tatkare as the NCP state president. On being questioned who will be the NCP president, Ajit Pawar says Sharad Pawar is the party's only national president. Speaker meets Fadnavis now in the assembly, set to discuss the disqualification petitions. After Sharad Pawar's loyalists dump him, Pawar pledges to rebuild the NCP from scratch. And Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi and Tejasvi Prasad Yadav are charge sheeted by the CBI. This is the land for jobs scam. Hello and a very good evening. You're watching The Burning Question and I'm Deepthi Sachdeva. It's not difficult to hazard a guess that we will be putting our focus on what's happening in the state of Maharashtra. But clearly what's happened in Maharashtra, remember, is not limited to the state because we are not looking at an impending assembly elections. So this means whatever's happened will have its direct impact on what possibly could happen in 2024. That is the Lok Sabha election. But before I come back to that story, I just want to re-jog your memory about a date. The date was the 23rd of June 2023. This is also the day when the Prime Minister was in the US. A lot of people said, why is the opposition deciding to meet only on the 23rd of June? Didn't they know that, the Prime Minister is going to be grabbing all the headlines? But then there was a school of thought that said Nitish Kumar has put up such great efforts to ensure that parties like the Congress, parties like the AAP, the parties like the Trinamool, that otherwise are difficult to come together on a common stage, are here together. Now, on your screens, in fact, these are images of 2018. This is also the moment when you had the entire opposition unity, but this is during the swearing in of H.D. Kumaraswamy. So what we'll also do is we'll request our team to put our images of what happened on the 23rd of June also for you. And in that meeting, you would realize Sharad Pawar. Not very away from him was also Supriya Sule. That is Praful Patel. Praful Patel today has jumped ship. It only means that he is no longer with the Shiv Sena, the Congress combined in the state of Maharashtra. And he today has decided to do business with the BJP in the state of Maharashtra. Now, why is there so much of spotlight on the man called Praful Patel, on the person called Sharad Pawar? Look at what Asaduddin Owaisi says, and you will be able to, actually understand what am I talking about. Owaisi says the opposition meeting was held in Patna and Praful Patel, whom Sharad Pawar had brought to the meeting, joined the BJP-led government. Despite this, he says the Congress distributes certificates of secularism. Then he goes on to say the Congress can take a look in the mirror and see how they have cheated people. This is not the only reaction. We have reactions that have come in from across political circles. And people are asking, the man called Sharad Pawar, would he be present in the next opposition meet that happens on the 17th and the 18th of July? Would he be called for that meet? Can people trust him? Does he have any credibility? He at one point, you would recall, did aspire for the top chair, for the Prime Minister's chair. Clearly, that is out of question. Could he have been a convener of whatever
the opposition was trying to get together. But Maharashtra happens, then within the next few hours is when this image, and I'm going to request our team to put that image back, of Akhilesh Yadav and KCR meeting. Now all this happens, ladies and gentlemen, 24 hours after you see the entire political chaos in the state of Maharashtra. Akhilesh Yadav decides to fly down to Hyderabad. He's meeting with KCR. Now who is KCR? KCR hates the Congress. He hates Rahul Gandhi. Rahul Gandhi was in Telangana just about yesterday. He said KCR is the puppet of Prime Minister Modi. So is Akhilesh Yadav wanting to also send out a message to Rahul Gandhi? Is Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal, Mamata Banerjee, KCR wanting to come together to create an anti-Congress front? So will 2024 be BJP versus a Congress-led front versus a non-Congress-led front, a third front? And if that happens, is that going to be clear advantage the BJP yet again? The Prime Minister not very long ago said 2024, ladies and gentlemen, is a done deal. We can keep talking about these pictures. The story is fascinating. The story is developing by the moment. But before I introduce a panel of guests who are all from different political parties, who will be telling you why these images are so very important, let's quickly bring up what's happened in Maharashtra, how it affects what could happen in Uttar Pradesh and in Bihar, and the big national picture of 2024. In a big blow to the efforts by the parties to forge an anti-BJP front in the 2024 elections, Ajit Pawar, backed by several MLAs, took oath as Deputy Chief Minister of the BJP Shiv Sena government, leaving the opposition unity in crumbles. The chinks in the opposition is visible over the fight for the post of LOP in Maharashtra, with Congress claiming they have the numbers. कांग्रेस के पास ज्यादा नंबर है तो कांग्रेस का ही विरोधी पक्ष नेता होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। नेता तय नहीं वो कर सकते, वो गठ नेता तय कर सकते हैं या प्रतुत तय कर सकते हैं। आखिर जिनका नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है मेंबर्स की, उसका ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा। AIMIM Chief Asaduddin Owaisi trained his guns at the Congress party after prominent NCP leaders joined hands with the BJP in Maharashtra. पटना में एक मीटिंग हुई और वो पटना की मीटिंग में महाराष्ट्र से शरद पवार साहब जिस शख्स को लेकर आए थे, प्रफुल्ल पटेल, आज प्रफुल्ल पटेल बीजेपी से जाकर मिल लिए। जो आपके साथ बैठकर बातें कर रहा है, वो चंद दिन के बाद आज बीजेपी की तारीफ करता है महाराष्ट्र में, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि ये सेकुलर है, ये कम्युनल है। In the wake of the developments in Maharashtra and the impending Bihar Assembly session, Congress has postponed the next opposition meeting in Bengaluru. This will not going to affect opposition unity. This is an internal issue of a NCP. We will declare the date very soon. Because some inconvenience there for the earlier dates for some or 2-3 parties. So we are talking to all political parties. Real date will be announced without any delay. The Maharashtra coup has certainly impacted opposition bid to unite for 2024. Bureau Report, Republic TV. So what will happen in 2024? Is the opposition already a worried lot? That's also the big debate that happens with Arnab close to about 10. But before that, we'll have a quick primer to understand why should a Monojit, Ravi today look really worried. Khalikur Rahmanji, I don't know whether he's worried or he's pretty happy that he's trying to stitch in, non-Congress and a non-BJP front. But it's good to see them smiling now. As I say, good evening to all of them. Along with KG Jozuman, who's a senior leader, the former National Secretary of the NCP with us. Rohan, it's good to have you back. He's a political analyst. And we also have Manoj Laldas, leader of the Janata Dal United with us. And I want to take my first question to Manoj ji, who represents the Janata Dal United. Nitish Kumar, Manoj ji, उन्होंने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, ममता बनर्जी को एक साथ लाया जाए, लेकिन वो तो फेल हो गए हैं। अखिलेश यादव आज केसीआर से मिलने पहुंच गए हैं।
देखिए, अखिलेश यादव जी भी जो केसीआर से मिलने गए हैं वो भी एक उसी रणनीति के तहत है। और फेल नहीं, राजनीति में फेल और पास का कोई अच्छा। शब्द थोड़ी होता है। लोग राजनीति करते हैं, राजनीति करना तो छोड़ नहीं देंगे। अगर हम चुनाव हार जाएं तो क्या हम राजनीति करना छोड़ देंगे? ऐसी बात नहीं होती है। तो प्रयास तो हमारा चल रहा है, नहीं, प्रयास हम राजनीति कर तो रहे नीतीश हैं। कुमार भी बखूबी करते हैं। नहीं सुनिए ना, मनोज जी, सारे लोग अब तो करते हैं, चर्चा इस सारे बात की लोग हो रही करते है हैं, कि कौन नीतीश कुमार राजनीति नहीं भाजपा के साथ वापस आना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये सब भाजपा के लोगों के द्वारा ही उड़ाया गया अफवाह है। कहीं से भी भाजपा के साथ जाने की कोई बातचीत नहीं हो अच्छा। रही है। सारे लोगों के साथ मिलकर आगामी चुनाव कैसे लड़ा जाए, इस विषय पर वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा कहीं से भी नहीं है कि वो भाजपा के साथ जा रहे हैं। यह तरह की एक पूरी तरह से ये अफवाह है। हाँ। अच्छा, आप कहते हैं ये अफवाह है, लेकिन अब बताइए, शरद पवार ने तो मतलब क्या कहते हैं कि उन्होंने तो आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया। अब बताइए, वो आपने उनको बुलाया ऑपोजिशन की मीटिंग के लिए, प्रफुल्ल पटेल नजर आते हैं। नहीं, जी, आपकी बात मैं मानता हूँ। कैसे विश्वास करेंगे उनके ऊपर? नहीं, विश्वास कैसे करेंगे? शरद पवार थोड़े चले गए हैं कि छोड़ के कि हम विश्वास न करें। तो एनसीपी मतलब शरद पवार है, एनसीपी मतलब कोई दूसरा नेता नहीं है। जदयू मतलब नीतीश कुमार है, जदयू मतलब कोई दूसरा नेता नहीं है। अजीत पवार तो रवि टुडे सेज I am the NCP. He says the party belongs to me, the symbol belongs to me. Ravi, the AAP has said we are not going for the next opposition meeting unless the Delhi ordinance is supported by the Congress. Ravi. See, as far as the ordinance is concerned, आती हूँ आपके पास, मनोज जी। रवि has already moved to the Supreme Court. Let the court decide about it. That is the one thing. But Congress has not made their stand clear. But what I want to tell you here is that our Prime Minister Shri Modi ji told in Bhopal that we are going to deal with all the corrupt people and we'll put them in the jail. What he actually meant was that he will not put them in the jail. He will put them in the BJP. And that is what will happen now. No, that Hassan Musharraf, that Chandan Bhujbal, all kind of corrupt people, they have taken in the government there and made to the minister. And they have undermined this fellow Eknath Shinde. Ravi, Monojit is nodding his head, but who knows? Monojit, tell me something. Can Mamata Banerjee now trust Sharad Pawar? Will he be called for the next opposition meeting? No. Will you allow more of the BJP allegedly in that opposition meeting? Forget about Mamata Ji, Sharad Pawar ji. First you decide who is going to trust Mr. Modi. कितना झूठ बोलते हैं, I'm sorry to use this language, और कितना बड़ा वॉशिंग मशीन बन गया। अरे ये बंदा के खिलाफ तो 38,000 करोड़ का करप्शन का घोटाला का केस था। कैसे वॉशिंग मशीन में घुस गया देखो, और डिप्टी सीएम भी बन गया। अरे what kind of a travesty is this? Do you think people of this country are fool? Do you think people of this country are unintelligent? You do not undermine the intelligence of the voters. They can understand that this party, BJP, is a fake party of India. मैं कहता हूँ भारतीय जाली party, the fake party of India, fights corruption by taking the corrupt party. Shubhendu Adhikari in Bengal, they showed him taking money 6 years back in 2016. Now he is the most important leader of BJP. Now this man Ajit Pawar, and on top of this, Dipti, what you are not looking at, Shinde का क्या होगा अभी? देखो कैसा खेल चल रहा है। And very soon you will see Mr. Shinde, who deflected from Shiv Sena, will be chucked out of this party. This person is going to be the chief minister. What is his name? Who is the chief minister? क्या है नाम? भूल गया नाम, इतना ज्यादा लगी है। और he is going to be the deputy chief minister. Fadnavis, yes. किनका नाम भूल गए? देवेंद्र फडणवीस, Devendra Fadnavis is going to be the chief minister of Maharashtra, and this person will remain the deputy. Shinde, अभी देखो आप क्या क्या होगा साहब, देखते जाइए। This is the politics that BJP plays. You will see this very soon. Within the next election, assembly election, Mr. Shinde will be driven out of this party. You will see this. So
Keep watching. Achha, Keep watching within. Monajit, it's fair. You're a political party. You can make predictions. But the point is, you're so worried about what the BJP is doing and not doing. And at Shazia, the washing machine is back to working in full steam again. Yes, before I take to Khalikur Rahmanji, Rohan, who hasn't spoken, also Mr. Ozaman, Shazia, just few days ago, the Prime Minister in Bhopal had spoken about the NCP and their corruption. There is an SIT against Ajit Pawar. So, I mean, is the BJP really not worried about this taint of corruption? Exactly. Tomorrow in the state of Maharashtra, when you're campaigning, Shazia, how will you recall the corruption of the NCP? So first, Cases will be closed. While the corruption of every party, all cases will be closed. Are you done bellowing and expressing? Let her respond, Ravi. You think your bellowing party like is this on done actually. television will ease Ravi, your frustration a bit? Ravi, the question has been asked to Shazia. Let her respond. You can Your scream some party more. is done. That's what I'm saying. How much you are talking about corruption. You have got army of corruption now in your party. You know, it is so obvious. Army of corruption in your party now. It is so You got obvious it or not? that you are You understood? that you are so deeply hassled, rankled, and irked to the point of complete desperation. Our and Prime frustration. Minister is hassled. This is why you are so exasperated, and you're not even letting me speak. Completely. Well, I don't have to say much. I don't have to say much. I want, You I first admit. No, you will have to allow. You want to scream some more? If that makes you feel better, please scream some more. Ravi, my guest. Only one thing you admit. Please show what we are doing is wasting time. This is a very serious debate. Ravi, you would agree. He has got. Okay. Yeah, let Now, him express his frustration. Shazia must be allowed to Please respond to that counter that is going the BJP's way. Ravi, No, I can't. We all can't speak at the same time. To give Shazia 30 seconds to respond. Shazia, so sad. Is the BJP's washing machine I want Ravi Srivastava to express Question number two. Will you do this in Bihar next? I want that. Washing machine Bhajpa. So I want. I'm quite happy. Monajit, you're again giving cover fire to Shazia. I don't know why. Please let her respond to those questions. Shazia. So first of all, let me say that while the corruption of each of these parties was called out, those corruption charges which have been going on and the cases are either not being accelerated, nor are they being done away with. The fact of the matter is that all these charges have been there for the longest period. And if this is the reason why these leaders wanted to join the BJP, why won't they do it earlier? Similarly, there are very serious corruption charges against Raviji's own party, which specializes in it, considering the fact it came from an anti-corruption platform. And of course, the TMC and all others who are expressing the exasperation in such a crazy manner. Let me finish. I'm making a point. What is the problem? See, this will not do. This will not do. This will not do. You will have to allow others to speak. Or you just show your own experience. I am not at all hassled by the fact that you want to button. Ravi, must concede the fact that if the BJP today does not, as you're alleging, does not have a local standard to talk about corruption, what about the Aam Aadmi Party itself? A party that has its genesis in an anti-corruption movement. Today you have Manish Sisodia, Satinder Jain still in jail. In fact, leave to Manish Sisodia has been denied right away even today also. Shazia, let's also quickly then get in. Let's also get in KJ Jozamon and Mohammad Khalikur Rahman. I want to answer your question. Then I'm going to come back to you. I want to say what I want to say. Otherwise, I'm not able to. Okay, quickly, Shazia. Say what I want to say next. I have not been able to answer your first question. Not quickly. Okay, quickly, please. I will not speak then, because you've not allowed me to speak. No, I will not speak quickly. Okay. I will answer every question. I'll give you 30 seconds, Shazia, uninterrupted. Thank you very much. You'll have to give me time, because I've not been even allowed to come in even once. So you'll have to allow me time. I will not be quick. Please complete your point, I've heard all the charges. I will speak what I have to say. So see, first of all, if this is a chamber for all these parties where they can express and be a catharsis of their frustration, and if it helps them in any way, be my guest. The fact of the matter is that there were same corruption charges for the longest period, and all these leaders
did not think of moving to आपके BJP earlier. सभी के घर There are में so washing many machine corruption है charges and many of them are specialists there. None of them are still very much part of the opposition. The fact of the matter is that the nepotism. Again is coming. BJP. Who's this person now? Who's this person now? BJP. Somebody's screaming now. But Okay, sir, Shazia, when you say that, very what good. happens to the Very NCP good. and the Carry on. Parivarwad? No, I'm not well. Aditi, no, You're I'm not also allowed in to come conversation Aditi, with the no, Akali Aditi, Dal. You have to give me time. You have to give me Shazia, time. I was answering that. I was not Shazia, giving this time. is Somebody was Deepti. One heckling me second. throughout. Shazia, listen. Don't keep saying Shazia. There are Aditi. serious Aditi, questions. can I There are tell you? serious questions today No, being no, raised on the Aditi. BJP. The Prime Aditi. Minister says, I will ensure that how every will I corrupt answer them if you person don't is let me? behind bars. How will- Right? Now, I today want to know, course, you want to put of course, and every they should corrupt be. person behind Of the bar. course. The country is with you, Shazia, but why are those Let me corrupt answer, people Aditi, I'm coming not into getting the a chance BJP to is what answer. the opposition is Aditi, I asking. want to answer just that. But I'm wanting to answer that, Aditi. I want to answer that. You're asking the same question. Okay, you're go not on, giving please. me time. And when you give me time, somebody speaks over me. So the Prime Minister of this country has ensured 9 years of corruption-free governance and a great governance. For the first time in the history of independent India, do we have a Prime Minister at the top with the entire ministries of which are squeaky clean for the first time in our country. We have never seen a single case of corruption against any ministers or the Council of Ministers of Prime Minister Narendra Modi. So congratulations to my party and my Prime Minister. Now coming to all the charges against Ajit Pawar and all the others, there are many others who have not come to BJP, who have corruption charges. The charges do not go away. The charges remain what they are. But the fact of the matter is, but what is the compulsion? No, Shazia, I have to intervene. As is being called. That comment has gone viral. Devendra Fadnavis saying, Chakki piecing and piecing. And now he's sitting next to that same man. People will ask you that question. No. Okay, Monajit, you have to wait because I want to take this to Mr. KJ Osamon and also Mr. Rahman who haven't spoken yet. I'll come back to you. Mr. Josamon, tell me something. Mr. Josamon, tell me something. Is Sharad Pawar is wanting to tell the world that, listen, I have nothing to do with whatever has happened. But no one wants to believe him. The opposition today has zero trust in Sharad Pawar. The same Sharad Pawar who announced initially that the opposition meeting will happen on the 13th and the 14th. And that meeting gets postponed and now we know that there is a new date. Why did these... No, Aditi, you say no one in the world do not want to believe Sharad Pawar. Maybe your opinion and your Prime Minister's opinion, because there is a strong opposition unity in the cards. And for 2024, a staggering election defeat is staring at BJP. So they are puzzled because what they have expected in Karnataka, what they have seen in Karnataka, and in Maharashtra as well, after Shinde government zone in, there were Sharad Pawar can't keep his own house in order, sir. How will he get the opposition parties together? Isn't that a valid question? I will just remain the name. Gamoji Shirke. It is who cheated. It is a sheer nepotism and dynastic succession and complete Parivarwad that has led to this crisis. That did not block instead of concentrating on that, taking over the country. Okay, yeah, so because you kept speaking. Backstabbers will be there, but they can make some noises, they can make some movements. But this blind love for one's offspring. The history will be making in India. My son, my daughter, my party. Despotic regime will be thrown away by the people of the country. They have started in Karnataka. It was in Maharashtra, and it's going to happen in other states of the country. But haven't people, sir, rejected that kind of politics? The politics that is only and only about corruption. It's about putting your own people forward. I will take absolutely. I agree, Shazia. I agree on that point. So, you must also today look worried. Akhilesh Yadav is meeting KCR. KCR was excluded from the opposition meeting.
Now, are you people trying to stitch a non-Congress third front? Khalikur Rahman ji. Yeah, good evening to all my co-panelists and good evening to all of you. Let me tell you, especially talking about the opposition unity, and you have seen how the opposition unity cracked yesterday, and it all started with Maharashtra. And the very gentleman, Mr. Sharad Pawar, who had in fact accused the BRS being the B team of the BJP. I still remember his statement on 17th of June, 2033. And now his party, and he has seen what's happened yesterday, Praful Patel and his own nephew, Mr. Ajit Pawar, they have in fact gone and joined the NDA. And there are news that Mr. Praful Patel is also likely to get the cabinet berth in the union cabinet. Now talking about the So opposition you unity. have all the gossip, you have all the information from the BJP scam. I'm asked. Yesterday, sir, Rahul Gandhi has called KCR the puppet of Prime Minister Modi. Yeah. See, what else can you expect from Mr. Rahul Gandhi, with all due respect to him? Because he, in fact, reached the whatever is given to him by the local Congress party. No, so are you then telling me that Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal, Mamata Banerjee have all pledged their support with KCR? See, you have to wait for 2024, or will you go and support the because BJP? What happens is, because we have been advocating right from the day one that we are going to maintain the equity strength with both BJP and the Congress. And Akhilesh ji coming to meet our honorable. See, that is the problem. Then don't say this is a fight for the country. This is a fight for ideology. Exactly. This is all convenience. No, Rohan hasn't spoken. We are towards the fag end of the debate. So please bear with me. Rohan, apologies. I'm coming to you last. But tell me something, Rohan, for the family. because you also support the Congress. This is a fight for an opposition unity are we even talking about? Aditi, give me 10 seconds. You have the entire opposition fighting against each other, Rohan. No, Deepthi, first of all, let's just put it, Mr. Sharad Pawar has... Mr. Rahman. And for what? Mr. Sharad Pawar has actually expelled the two, Mr. Praful Patel and the state president. So, and Mr. No, not state president. Sunil Tatkare. Sunil, yes, sorry. Sunil ji and Praful Patel has been expelled by Mr. Sharad Pawar, and Mr. Ajit Pawar has gone on record and said that Mr. Sharad Pawar is the national president of the NCP. So for you to say that the NCP is no longer part of the opposition unity, this means, Rohan, Sharad Pawar is a part of the entire plan. No, isn't that more worrying today for the Congress? Mr. Sharad Pawar if you have has a mole in the opposition today. You know, Jitin Ram Manji was taken out of the entire opposition meeting, and Manoj ji would remember this. तब नीतीश कुमार ने ये कहा था मनोज जी कि जितिन राम मांझी एक मोल है, वो बीजेपी के मोल है, जाकर सारी खबरें बीजेपी को बताते हैं. लेकिन यहाँ तो शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल उस मीटिंग में मौजूद होते हैं, रोहन. And you are telling me that Sharad Pawar had no idea? No, who is Mr. Praful Patel? Mr. Praful Patel is known in Indian politics only because of Mr. Sharad Pawar. So we cannot put Mr. Praful Patel at such a high pedestal all of a sudden. This is a man who was appointed the working president of the NCP. But what about Sharad Pawar? No, he was Rohan, such a grateful person to Mr. Sharad Pawar. For him to backstab Mr. Sharad Pawar today shows the kind of person that he is. So the Indian public, he can go and become the cabinet minister, but the Indian public is not going to support a person like him, is not going to support a person like Ajit Pawar. NCP is known because of Mr. Sharad Pawar. Okay. So that's not... small See, this is the problem. Shazia can have a good laugh because the entire opposition is fighting amongst each other. But मुझे एक लास्ट सवाल मनोज जी आपसे पूछना है. तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट आ गई है. अब नीतीश कुमार के मॉरल्स कहाँ हैं? उनके प्रिंसिपल्स कहाँ हैं? नीतीश कुमार को तो बर्खास्त करना चाहिए अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को. देखिए, तेजस्वी यादव रेल मंत्री थे. ये तो सीबीआई 22 वर्षों में इस केस को आगे चल रही है. जो लोग बीजेपी के खिलाफ में है, वो उसके इशारे पर चाहे 22 साल बाद कार्रवाई है, 220 साल बाद देखिए, स्कैम तो स्कैम है ना. स्कैम से तो कोई मना नहीं करता कि स्कैम हुआ है. क्या बात कर रहे हैं? चारा घोटाला से सबसे ज्यादा
स्पष्ट है ये। It is so. ये क्या, इसको आप क्या करप्शन कहेंगे? जब सीबीआई के इशारे पर हो रहा है तो आप बताइए ना कि क्यों अरे नहीं भाई, आप ही का जवाब देना चाह रहे मुख्यमंत्री हैं के खिलाफ भाई साहब कार्रवाई मेरे। की? क्यों नहीं जेडीयू के सबसे ज्यादा तो है ना। अगर तो ये है, बीजेपी के पास अब कुछ है नहीं बचा हुआ। लालू यादव सर सजा इस समय उनके खिलाफ चार्जशीट भी है। नहीं, लालू यादव जी सवाल काट के आए। देखिए सवाल वही है जो महाराष्ट्र में हुआ है ना मनोज जी। अगर समय रहते नीतीश कुमार अपने घर को भी नहीं संभाल पाएंगे तो देश को कैसे संभालेंगे? We've completely run out of time, but I promise we'll carry forward this conversation. Manoj ji, Ravi, Mr. Joseph, Mr. Rahman, Rohan and Manoj ji and Shazia. I thank all of you right now. This is just the beginning. Like they say, picture abhi baki hai. I quickly need to head into a break. On the other side, we are back with lots more. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto.
Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Trending burning question, powered by Reva University, NECC and Century Ply. Joining us on the trending burning question tonight is Maharashtra Cabinet Minister Mr. Girish Mahajan, who's also considered to be a close confidant of Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis. गिरीश जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा आंकड़ों के साथ। अजीत दादा के साथ कितने एनसीपी के एमएलएज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से शरद पवार की टीम कहती है कि जितने लोग गए हैं वो वापस आ जाएंगे, तो आंकड़ों को लेकर अब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि अजीत पवार साहब के साथ में एटलीस्ट मतलब आज 30 का फिगर तो है, लेकिन ये कल तक बढ़ेगा, परसों तक बढ़ेगा। और आप देखिए 35 प्लस 40 के आसपास कहीं तो भी ये फिगर जाएगी, लेकिन पूरी पर्याप्त संख्या उनके पास है। लास्ट टाइम में जैसे पवार साहब ने कहा था कि मैंने ही दादा को भेजा था, लेकिन वो गलत था मेरे हिसाब। उन्होंने अजीत दादा ने वोट लिया था, उस वक्त 7-8 ही लोग उनके साथ में थे, उनको लगा भी था कि मेरे साथ में लोग रहेंगे, पवार साहब ने भी कहा था, लेकिन पवार साहब ने उसमें से पीछे मुड़ कर लिया, तो इसलिए दादा के साथ में कोई नहीं बचा था। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसे लगता है दादा पूरी तैयारी के साथ में आगे बढ़े हैं, और कल तक मुझे ऐसे लगता है 35-40 तक ये फिगर पूरी जाएगी। गिरीश जी, पर सवाल तो ये उठता अब तक कि इसको लेकर आप लोग कहते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार, पर क्या आपको लगता है कि एक तरह से आप सबको अकोमोडेट कर पाएंगे? और कैबिनेट रीशफल की अगर बात करें तो कितने शिंदे गुट के कितने होंगे और साथ ही साथ एनसीपी के कितने होंगे? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 9 मिनिस्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो बचा कितना और आखिरकार बीजेपी को कितने मिलेंगे? भी पहले 10 मिनिस्टर तो बीजेपी के थे, 10 मिनिस्टर शिवसेना के थे, और अभी 9 मिनिस्टर 29 मिनिस्टर जो अभी हमारे मंत्रिमंडल में बन चुके हैं, और 42 मतलब अभी 12 से 13 मिनिस्टर और बन सकते हैं। उसमें अभी शिवसेना भी है, बीजेपी भी है। अब देखते हैं, ये तो माननीय सभी अधिकार जो है ये मुख्यमंत्री जी का है, हमारे तरफ से डिप्टी सीएम देवेंद्र जी देखेंगे, और ऊपर से भी हमारे हाई कमांड है, उनसे भी इसके लिए बात होगी, वही तय करेंगे कि उनसे पार्टी के अभी कितने मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये हम लोगों में बहुत अच्छा तालमेल है, सीएम शिंदे जी, देवेंद्र जी, इनमें दोनों में भी अच्छा तालमेल है। मुझे लगता है ये आपस में बैठ के ये पूरी बातें हुई भी है, और अभी भी आगे भी जो भी होगा वो सभी, अभी तो दादा भी हमारे साथ में है, तो सभी में सलाह मशवरा करके ही ये बातें होगी। पर गिरीश जी, संजय राउत ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के सरकार कुछ दिनों के मेहमान है, और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप संजय राउत को क्या कहेंगे? संजय राउत जी तो उनको तो रोज कुछ ना कुछ कहना है, लोग उनके ऊपर भी भरोसा भी नहीं करते। लोग संजय राउत तो पीछे भी कहते कि उद्धव जी को हमें पंतप्रधान बनाना है। अभी देखो, इससे बड़ा जोक और क्या शौक हो सकता है। तो संजय राउत जी
जो मन में आए वो बोल सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। ये आप सभी देख रहे हैं, सभी दर्शक भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र भी उनको झेल रहा है। तो उनके कहने को कोई हम लोग ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेते और कोई भी नहीं लेता। वो तो उनकी तो उनके वजह से तो पूरी शिवसेना डूब गई। उनके वजह से मैं कहूँगा एनसीपी के भी डुबाने में भी उनका भी बड़ा हाथ है। तो मतलब पवार साहब भी उनका ही सुनते थे, उद्धव जी भी उनका ही सुनते थे। और आज दोनों पार्टियों की हालत क्या हुई है आप भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। गिरीश जी, उद्धव ठाकरे थोड़ा सहयोग, थोड़ी भागीदारी तो राउत जी की भी है। कैसी भागीदारी रहा है? नहीं, देखो अभी संजय राउत शरद पवार के तो गोदी में जाके बैठे थे, दोनों एक दूसरे का सुन के काम कर रहे हैं। संजय राउत तो उनके प्रवक्ता करके बातें करते हैं, मतलब आधी बातें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की संजय राउत ही बताते हैं, वही उनका निर्णय करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि संजय राउत ने जैसे शिवसेना को डुबाया, वैसे पवार साहब के कांग्रेस को डुबाने में, राष्ट्रवादी कांग्रेस डुबाने में भी उनका भी सहयोग बड़ा है। और इसलिए दोनों पार्टियां जिनकी आज इतनी बुरी हालत हुई है, उसमें संजय राउत, उनका रोज उठ के सुबह उठ के उनका पूरा अनगुन कुछ भी बयान देना, कोई भी बयानबाजी, गलत बयानबाजी करना, ये तो पूरा सब लोग ही देख रहे हैं। अब लोग भी उनसे तंग आ चुके हैं, वो कल कुछ भी कहेंगे। अभी एकनाथ जी सीएम नहीं रहेंगे, दूसरे और कोई सीएम बनेंगे, तो उनको कोई नहीं रोक सकता, वो कुछ भी कह सकते हैं। गिरीश जी, और एक सवाल जो करना चाहूंगा इस वक्त वो ये है कि कैबिनेट को लेकर, कैबिनेट रिशफलिंग को लेकर कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे कि अनबन बना हुआ है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और एकनाथ शिंदे के गुट के कार्यकर्ता, दोनों के बीच में अनबन है। कोई अनबन नहीं है, हमें पूरा तालमेल है, हम बिल्कुल सब लोग एक है। हमारे पार्टी में तो यहाँ पर देवेंद्र जी हमारे नेता है, बावनकुले जी हमारे अध्यक्ष है, और ऊपर से जो भी निर्णय केंद्र की तरफ से आएगा वो हमको सभी को लागू है। इसलिए हमारे पार्टी में तो कोई अनबन है, ये मैं आप पहली बार सुन रहा हूँ आप ही के मुँह से। और एकनाथ जी जो है शिंदे साहब, उनकी भी पूरी टीम उनके साथ में है। मुझे लगता है कि सीएम साहब, डीसीएम साहब दोनों ने मिलकर ही ये निर्णय किया है, इसमें कोई एक तरफा निर्णय नहीं हुआ है, सबसे सलाह मशवरा करके ये निर्णय हुआ है। इसलिए कोई हम लोगों में अनबन नहीं है, सभी हम लोग साथ में ही हैं। गिरीश जी, एक छोटी दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बार थोड़ा खुल के बताएं, क्योंकि आखिरकार सबको जानना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है हर किसी का हक है ये जानने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि मई महीने में अजीत पवार आपके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। शरद पवार जी को पता चल जाता है और कहीं ना कहीं इसे रोकने की कोशिश की जाती है। आपको ये माना जाता है, आप उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बहुत ही करीबी है, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो पता है कि बातचीत कब से शुरू हुआ। आज थोड़ा तो खोल के बताइए कि ये बातचीत बीजेपी और एनसीपी के कब से हो रहा है। नहीं, ये बात तो बताना मुश्किल है, क्योंकि इस बात की भनक तो हमें किसी को भी नहीं थी। ये कब बातचीत शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये किसी को ही पता नहीं है। शायद ऊपर के लेवल पे ये बात हुई है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जब से मतलब दादा बहुत दिनों से नाराज़ भी थे, और जब से पार्टी की एनसीपी की मीटिंग हुई और शरद पवार साहब ने उनकी लड़की को जैसे सब आला कमान बना दिया, मतलब सब कमान उन्होंने संभाल ली, तो तब से दादा नाराज़ थे। क्योंकि दादा एक महाराष्ट्र के एनसीपी के कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, प्रभावशाली नेता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक परिवारवाद कि बस मैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, और इसी की वजह से झगड़ा शुरू हुआ, दादा को अलग कर दिया गया। सीधा सवाल करूंगा, एनसीपी में अनबन शुरू हो गई। हाँ, मैं सीधा सवाल करूंगा गिरीश जी, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बचाने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इससे एनसीपी में जो फूट हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सुप्रिया सुले का हाथ है?
बिल्कुल, मेरा जहाँ तक के ख्याल है, मैं जो तक सोच है मेरी, तब तो इस असली वजह इसी की यही है कि सुप्रिया सुले जिनका नाम शरद राव जी ने आगे किया, मतलब दादा में क्या कमी थी? सभी लोग दादा को फेवर करते थे, सभी एमएलए हो, एमपी हो, सभी जो प्रमुख नेता है एनसीपी के पूरे राज्य के, वो सभी का कहना यही था। सभी मतलब बातें भी करते थे कि दादा जैसा पावरफुल नेता कोई है नहीं एनसीपी में। और उसके बावजूद भी जब पवार साहब अपने लड़की को आगे करते हैं तो जायज़ है, बिल्कुल नेचुरली ये तो कि सभी के मन में एक रोष था, एक गुस्सा था, और वो आज उमड़ पड़ा है कि जो अजीत दादा के साथ में इतने लोग सब मिल गए। लास्ट टाइम तो थोड़ा उन्होंने ठोकर खा ली थी, थोड़ी गलती उनकी भी हुई थी, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है शरद पवार साहब कुछ भी कहे कि मेरे साथ इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, लेकिन अभी लोग, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, अजीत दादा के साथ में ही बड़ी संख्या में सभी एमएलए रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अजीत पवार वापस शरद पवार के पास जाएंगे? या और दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि शरद पवार को इसके बारे में पूरा मालूम था, क्या आप इस पूरे ऐसे जितने खबरें आ रहे इसको नकारेंगे कि शरद पवार को इस बार इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था और अजीत पवार इस बार वापस नहीं जाने वाले? मुझे नहीं लगता अजीत दादा वापस जाएंगे। जिस तरह से 4-5-6 किस्से ऐसे हो गए कि अजीत दादा को कोई विश्वास में भी नहीं लेते थे, अजीत दादा से कुछ बातें भी छुपाते थे जो आपके मीडिया से हमें मालूम पड़ता था। तो बहुत सारी बातें ऐसी है, कुछ किस्से ऐसे भी हुए कि अजीत दादा को कोई किनारा कर रहे थे, सुप्रिया जी को आगे बढ़ा रहे थे, तो इसलिए दादा भी बहुत नाराज थे। और दादा के समर्थक हैं, उनको भी ये ठीक नहीं लगा, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई दादा को बाजू में करके सुप्रिया जी को आगे, क्योंकि हर एक का अपनी अपनी ताकत होती है, एक का टैलेंट होता है। तो दादा जो है आज सबसे प्रभावशाली नेता करके एनसीपी में उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नाम चल रहा है। और इसलिए बाकी जो एमएलए थे, कि अजीत दादा भी थे, उनके प्रमुख नेता थे। आप सीधे तौर से कह रहे हैं कि अजीत दादा काफी नाखुश थे शरद पवार के इस पूरे फैसले से कि सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाया जाए और पार्टी का कमान सुप्रिया सुले को दे, इससे दादा बड़े नाखुश थे? बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि दादा को जिस तरह से साइड में कर दिया गया था, दादा को कोई विश्वास में नहीं लिया जा रहा था, और उसके बाद में जो निर्णय इन्होंने सुप्रिया जी के लिए किया कि उनके सब आना कमान, मतलब जो समाज जो कमान है एनसीपी की, वो उन्हीं के हाथ में दे दी। और इसीलिए आज दादा अलग हो गए। आज दादा के साथ में भारी संख्या में एमएलएज है, उनको भी ये निर्णय अच्छा नहीं लगा, तो वो भी उनके साथ में आ गए। एक आखिरी सवाल करूंगा ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर, क्योंकि कुछ नेताओं से जब मैंने महाराष्ट्र में बात की तो उनका ये कहना था कि जब शरद पवार राहुल गांधी के साथ बैठते हैं और ऑपोजिशन की बात किया जाता है तो ऑपोजिशन यूनिटी में ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, शरद पवार का नाम तो कहीं था ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि अब ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर क्या होने वाला? बिहार में तो कह रहे थे कि सब साथ में जुड़ेंगे, अब क्या होने वाला है इसको लेकर? अभी देखो, अब बिहार में सब लोग इकट्ठा हो गए, मतलब सब लोग नहीं बोलूंगा लेकिन काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। नतीजा क्या निकला? कोई पीएम का नाम निश्चित हुआ? मैं कहता हूं अगर पीएम का नाम ये निश्चित की बात आएगी तब आधी पार्टियां भाग जाएगी वहां से, क्योंकि सबको उसमें पीएम बनना है। और ये अपोजिशन जो है वो इकट्ठा क्यों हुए? तो कोई देश हित के लिए नहीं हुए, कोई अच्छे निर्णय के लिए नहीं हुए, खाली इनको अपने परिवार को बचाना है। ये परिवारवाद वाली सभी पार्टियां हैं और इनको अपने अपना घर चलाना है, अपने परिवार को चलाना है। जैसे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में देखेंगे शिवसेना है तो उनको अपने परिवार चलाना है, उनको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उद्धव जी को। पवार साहब देखेंगे शरद पवार जी तो उनको सुप्रिया जी को आगे बढ़ाना है। अभी आप आरजेडी में देखेंगे तो तेजस्वी यादव है, उमर अब्दुल्ला जी कश्मीर से है, उनको अपने परिवार को आगे चलाना है। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना। ये अपने अपने परिवार के लिए झगड़ने वाले लोग हैं। ये कई जगह बुरी तरह फंस भी गए हैं, करप्शन में इनके ऊपर बड़े चार्जेस हैं। तो मुझे लगता है इनमें से इनको निकलना है और अपने परिवार के हाथ में पूरी आगे की उनके स्टेट की हो, ये सब भागदौड़ सौंपना है। इसलिए इनकी एक कोशिश है, लेकिन आपको पता है कि पूरा देश आज मोदी जी के साथ में है। मैं कहूँगा कि लास्ट टाइम तो हमारी 302 सीटें थी, इस टाइम 330 340 के नीचे हम एक भी सीट नहीं लेंगे, एक भी सीट नहीं लेंगे। तो इन्होंने कितनी भी कोशिश करने दो, कितने भी कोशिश करने दो, इनमें तो पीएम का नाम ही फाइनल नहीं होगा। नाम होते बराबर सब पार्टियां इतर बितर हो जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर एक भी होती है, इकट्ठा भी होती है,
तो बहुत मतलब बुरी हालत लोकसभा के चुनाव में अपोजिशन की इस वक्त होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश महाजन, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। दैट वाज कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन, essentially holding Supriya Sule completely responsible for the split within the NCP. Trending burning question powered by Reva University, NECC and Century Ply. Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Hello.